Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss a poem entitled as Didn't He Ramble, which has been written by Edward Brathwaite, who was born on 1930 and died on 2020. His poem Didn't He Ramble has been taken from his poetry collection Rites of Passage, which was published itself in 1967. It is a narrative poem, it is also a tragic poem. This poem explores the disruptive and destructive consequences of migration when reality falls far short of personal expectations in one's chosen land of sojourn outside the Caribbean. Unlike the persona of South, one of the poems written by him from this collection also, that returned to his glorious homeland to relive life anew, the persona of Didn't He Ramble, Tom did not have the opportunity to return like the prodigal, and he paid dearly for it. Tom successfully migrated to the country of his dreams with great hopes and expectations, believing that he would finally overcome the bitterness he nursed against his homeland in his new land of sojourn. Now, the opening stanza of this poem reflects his state of mind on arrival. So, to New York, London, I finally come. So, to New York, London, I finally come. Hope in my belly, hate smoothed down to the bone to suit the part I am playing. Smoothed means to suffocate or obstruct. So the poet is saying, or the persona or the narrator is saying that he has finally come to the London, to New York, London. Okay. सो इस पोइम का जो नरेटर है, जो पोइट है या फिर जो पर्सोना है, वो कह रहा है कि वो फाइनली न्यूयॉर्क लंदन में आ गया है. दिल में उम्मीदें लिए, हेट स्मूदर डाउन मीन्स हेट जो है उसकी अभी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, अभी बंद हो गई है, रुक गई है वो. टू द बोन टू सूट द पार्ट आई एम प्लेइंग, तो जो पार्ट वो अभी सेकंड कंट्री में प्ले कर रहा है उसके जो भी उसकी पहली कंट्री के खिलाफ उसकी जो भी हेट थी वो अब थोड़ी सी स्मूदर हो गई, सफोकेट हो गई है वो. That summer was fine, newspaper notices, variety acts, what the heart lacked we supplied with your hips, and the art of our shuffle shoes. Shuffle shoes means an instance of walking without lifting one's feet. Okay, now having arrived in summer, Tom was not aware that winter existed. So Tom was not aware about this thing, that there are kind of different kind of atmosphere in the other country where he is traveling. Now he indulged in the pleasures of the best with his summer earnings, unaware that the times in his new abode are unlike those in his homeland. When winter finally arrived, it catches him cold. So he gets cold. That we get to know in the second stanza, that with the winter I knew I was old, poor Tom was cold. So he catches cold when winter arrives, and lacking the resources to sustain his stomach and his health, the weather renders him delirious. So with the winter I knew I was old, poor Tom was cold, feet could no longer walk the full and cold parks, gates closed, the pavements skidded blue and frozen. To and fro I walked, I wondered, wind cut my face with its true gilded razor blades, and snow burnt the river's bridges in my small hired room stretched out upon the New York Herald Tribune, pages damp from dirty loads, from locked out parks, from gutters, dark, tired, deaf, cold, too old to care, to catch alight the quick match of your pity. I died alone without the benefit of fire. So with the winter he knew that he was old. Poor Tom, the narrator, he catches cold. Okay, he gets he gets ill in the winter. Feet could no longer walk the fallen gold of parks. अब वो now जो उसका जब वो आया था when he was young, so the summer has been compared to his young age. So he used to read newspapers, variety acts, he used to dance, or he used to have fun. He used to follow the art of shuffle shoes. So he had kind of all kind of funs, and he used all his resources while he was very young. But when he gets old, when the winter arrived, when he gets old, then he knows that he has used all those resources. So he gets cold, he gets ill, and when he gets ill, he didn't have enough time or enough money to spend on his health. Okay, feet could no longer walk the fallen gold of parks. Now he was not able to to walk those golden parks. Gates closed, the pavements skidded blue and frozen. Now comes to the other idea of the poem, that the gates were closed in the winters, the pavements skidded blue and frozen, the pavements were frozen.
टू एंड फ्रो आई वॉक्ड आई वंडर्ड, आगे पीछे वो चल रहा है एंड वो वंडर्ड कर रहा है, सोच रहा है वो, ही इज थिंकिंग, विंड कट माई फेस विद इट्स ट्रू जिलेट रेजर ब्लेड्स एंड स्नो बर्न द रिवर्स ब्रिजेस। जो हवा है वो उसके फेस को काट रही है जैसे कि एक जिलेट रेजर ब्लेड्स की तरह। सो द विंड हैज़ बीन कंपेयर टू हैज़ बीन पर्सोनिफाइड टू हैविंग जिलेट रेजर ब्लेड्स एंड स्नो बर्न द रिवर्स ब्रिजेस, एंड स्नो जो है, स्नो रिवर्स के जो ब्रिजेस हैं वो उसको काट रही है, जला रही है उसको, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ आयरन, because the bridges are made of iron, so that's why they are being burned by the snow. In my small hired room stretched out upon the New York Herald Tribune, pages damp from dirty loads, from locked out parks, from gutters, dark, tired, deaf, cold, too old to care to catch. Now he used to live in a small hired room. He has hired a room. He used to live in that room, and there were New York Herald Tribunes were stretched out in his rooms. Pages were damp from dirty loads because the damp was उस पर इकट्ठी होती जाती है ना, जैसे जैसे आप ट्रिब्यून को या न्यूज़पेपर को इकट्ठा करते रहते हैं तो उस पर धूल इकट्ठी होती रहती है। फ्रॉम लोक्ड आउट पार्क्स, फ्रॉम गटर्स, टायर, डेफ, कोल्ड, ये सारी अपनी कंडीशन बता रहा है वो। टू अर्ल टू केयर टू कैच अ लाइट द क्विक मैच ऑफ योर पिटी। सो similarly, when the pages of newspapers gets too damp, so they are so damp that they will not catch the fire. Similarly, he is also becoming that kind of old. He is comparing himself to that old newspaper, okay, who is of no use. He is of no use right now, okay. I died alone without the benefit of fire. So he died alone without the benefit of fire. So there people do not light the fire, so they bury you in the earth, okay. So he died alone without the benefit of fire. Now let us move on to the second part of the poem, bring me now where the warm wind blows. So regretfully here he realizes that the west that he migrated to lacked all the gifts of nature in the Caribbean and also the compassion of his society in his homeland. So regretfully he realizes that the best that he migrated to lacked all the gifts of nature in the Caribbean and also the compassion of his own society in his homeland. He then yearns to be brought back to the Caribbean island. The warm wind blows, okay. So bring me now where the warm wind blows, where the grasses sigh, where the sweet tongued blossom flowers, where the workers rest, where the cotton drips, where the rivers are and the minstrel sits. Okay, so he is remembering his old country here. He is remembering his old country. वो कह रहा है कि मेरे को वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे warm wind blow करती है। कहाँ पे करती है? कैरेबियन में करती है, अफ्रीका में करती है। Where the grasses sigh, यहाँ पे grasses sigh लेते हैं, सांस लेते हैं grasses, ठीक है। So he is personifying the warm wind and grasses having sigh, where the sweet tongued blossom flowers. Now blossom flowers are also having personified, having tongue, sweet tongued, where the showers fan soft like a fisherman's net through the sweet ended air, okay. Where the shower, यहाँ पे showers when the fan soft like a fisherman's net through the sweet ended एयर, ठीक है। जहाँ पे शावर निकलते हैं फिशरमैन के नेट में से, जब नेट मछलियाँ निकालते हैं ना तो कहीं ना कहीं कुछ बाहर निकलती हैं, बूंदें बाहर गिरती हैं, तो उन्हें वो शावर से कंपेयर कर रहा है। ब्रिंग मी नाउ वेयर द वर्कर्स रेस्ट, यहाँ पे वर्कर रेस्ट करते हैं। वेयर द कॉटन ड्रिफ्ट मीन्स टू एक्यूमुलेट इन हीप्स बाय द फोर्स ऑफ विंड, ओके। फिर द कॉटन ड्रिफ्ट, यहाँ पे कॉटन बनाया जाता है, कॉटन निकाला जाता है। वेयर द रिवर्स आर एंड द मिस्ट्रल सिट्स, यहाँ पे नदियाँ हैं जहाँ पे मिस्ट्रल्स बहते हैं, ठीक है। मिस्ट्रल होते हैं बच्चों वन ऑफ ए ट्रूप ऑफ एंटरटेनर्स ऑफ ए white person who wore black makeup, blackface to present a variety show of banjo music, dance and song and now sometimes regarded as racist. On the logwood stump means दरख्त का तना, the remains of a tree that has been cut off, okay. On the logwood stump with the dreams of his slow guitar, यहाँ पे वो ड्रीम्स लेते हैं स्लो गिटार्स की, ठीक है। कब वो स्लो गिटार खरीदेंगे, क्योंकि अभी तो बेंजो बजा रहे हैं वो, तो कब उनको इतना मौका आएगा कि वो स्लो गिटार्स खरीदेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें वो अभी ना अभी याद कर रहा है, ठीक है। Oh, now in addition to all these, Tom discovers that missing also in the best are things that are taken for granted in the Caribbean, such as songs and dances I just mentioned, fanning showers, drifting cottons, rivers, slow guitars and speaking drums. These are things missing in the West, okay. So he dies eventually and finds the warmth and comfort he could not get from the society of the best in the grave.
but peace he does not find even in death, as he buries what but damage those that will come after him would do to his homeland at their return from the best. Okay, so here he is saying that thing, but my sons grow fat, but my sons grow fat far from the slow guitar. See them jute suits, man, them black Texan hats, watch false teeth. Jute suit means an outfit featuring a suit with a broad shoulders, a long coat, and a baggy trousers that taper to a tight fit at the ankles. And Texan hat means offer pertaining to the US state of the Texas in general. ठीक है, so he is saying that मेरे बच्चे जो हैं वो they are growing fat by eating European foods, by eating West food, so they are growing fat far from the slow guitar, so they are very far from my country, they are very far from those slow guitar that I had just mentioned in the last stanza. Okay, so they are very far from that. They are wearing jute suits, they are wearing Texan hats, watch false teeth, they are applying false teeth, so which are flashing, so watch false teeth flash. Fake friendships make them mock your grief, so they are having the fake friendships, and when they hear about your griefs, so they mock them, they mock your griefs, and overnight they are the people's choices, the people's politicians. Now they would be the people's choices, the people's politicians, and would corrupt the values at home with the ones they imported from the best. So when they will come back to their country, to Caribbean or to Africa, they would be the people's choices, they would be the people's politicians, and would corrupt the values at home, those values that are prevalent in Africa, in Caribbean. So they would corrupt those values with the ones they imported from the West. They are the disease, falsehood, exploitation of the poor, materialism, and other vices of capitalist lifestyle of the West would replace indigenous ones to the detriment of society. That we get to know in the second stanza. It's now grab the can, grab all you can, and give it to yourselves, the poor. Okay, so it's now grab the can means whatever you can take it. Okay, don't think about other people like we used to in our country. Don't think about other, just think about your belly and try to fill it as much as you can. Okay, just exploit the poor if you can. So these kind of things are prevalent in West. So they will inherit those things from the West, and they will, when they will go back to Africa, they will take these kind of all ill habits from West, and they will exploit his country. So now even in his graves he is worried about his country. Okay, let's legislate. Come to the next paragraph. Let's legislate that black is white and white that black dominion that we aim for evermore. Legislate means to pass laws, including the amending or repeal of existing laws. Okay, किसी लो को पास करना या फिर किसी जो लो है जो किसी टाइम पे उसको चेंज करना. ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये लो चेंज करो आप कि जो ब्लैक है वो वाइट बन जाए और जो वाइट है वो ब्लैक बन जाए. ठीक है, और ब्लैक वाइट बन के वाइट के ऊपर जो कि अभी ब्लैक बन जाएंगे उस पर डोमिनियन करें, जो कि वो हमेशा से चाहते हैं. सो बर्न द क्रॉप्स, रेज फ्लैश कारसिटीज, आई एम सेलासी. तो कह रहा है कि इनकी भी फसलें जाओ, जिस तरीके से इन्होंने हमारी फसलें जलाई हैं ना, इनकी भी फसलें हम ऐसे जलाएंगे. हम भी गाँव को उजाड़ के फ्लैश कार सिटीज़ बनाएंगे. ठीक है, आई एम सेलासी. सेलासी मीन्स पावर ऑफ द ट्रिनिटी and Selassie God. Now here is a reference to Haile Selassie, who is known as the Emperor of Ethiopia. He was from 1930 to 1974. He is known for modernizing his country, for helping to establish the organization of African unity, now the African Union, in 1963, for his exile 1936 to 1941, and for being overthrown in 1974. Hail and Selassie God. Here Selassie God. What do you mean by Selassie God? So Haile Selassie never regarded himself as God, nor did he adhere to Rastafari. So Rastafarians regard Haile Selassie as God because Marcus Garvey's prophecy looked to Africa, where a black king shall be crowned. He shall be the Redeemer, was swiftly followed by the ascension of Haile Selassie as Emperor of Ethiopia. That's why the Rastafarians, who is kind of a group who is working for the freedom of Africans, who are working for the freedoms of Caribbean people, so they regarded Haile Selassie as their God. Okay, but Haile Selassie never regarded himself as God. Okay, black snow falls from my heaven. So when we will become we will come into power, we will rule the white people, then from our heaven black snow will be fall.
कोई हमारे जो स्वर्ग है उससे ब्लैक स्नो निकलेगी, ताकि ये जो ब्यूटी को वाइट के साथ कंसिडर किया जाता है, इसको हम कहीं ना कहीं उल्टा कर देंगे, हम ब्यूटी को ब्लैक से कंसिडर करेंगे, हमारी जो स्नो है वो ब्लैक होगी। यू स्क्रैच माई ड्रम आई बीट योर वायलिन, तुम मेरे ड्रम को स्क्रैच करो, मैं तुम्हारी वायलिन को बीट करूँगा। आई हु वॉज वंस योर स्लेव नाउ स्लेव माई कैप्टिव फ्रेंड, मैं जो कि कभी तुम्हारा स्लेव हुआ करता था अब तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा मैं, ठीक है, और तुम मेरे स्लेव बन जाओगे, ठीक है। नाउ दोस्तों जो राफ्तारियंस हैं दे आर रिलेटिंग टू अ रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द जमैकिन ओरिजिन, होल्डिंग दैट एम्परर हेल सेलासी ऑफ इथियोपिया was the Messiah and that black people are the chosen people and will eventually return to their African homeland. Okay, now let us move on to the second part of the poem or fourth part of the poem. But perhaps I am too far away to care about these things. Now he says that I am too far to care about all these things because I am already in the grave. Okay, he is imagining himself in the grave, so he says that perhaps I am too far away to care about these things. Here once the more good soil warms me. अब now he is in the grave, so here the here the soil is warming him. That जब वो जिंदा था तब तो वहाँ की मिट्टी ने कभी उसको वार्म नहीं किया, लेकिन अब जब वो मर गया है, अब वो ज़मीन के अंदर है, तब वहाँ की मिट्टी उसको वार्म कर रही है. Worms now warn me of the too much faith, the too much fear of others. लेकिन कीड़े जो हैं worms जो हैं, जो कीड़े हैं, they are warning him the too much faith, ज़्यादा फेथ किसी में रखना या फिर ज़्यादा डर किसी से रखना ये सही नहीं है, इससे बच के रहना तुम, ठीक है. द स्किन्स डिस्ट्रॉयर इन दिस सॉफ्ट सब्सिस्टेंस ओबेस इम्पार्शियल रूलोज. तो जो स्किन डिस्ट्रॉयर है दैट इज द वर्म, so in the soft substance they obeys impartial laws, so they are impartial to anyone, and they are not partial to anyone, so they follow the impartial rules. they सभी की बॉडी के साथ एक जैसे ही ट्रीट करते हैं, सभी के बॉडी को एक जैसे ही खाते हैं. एंड आई नो लॉन्गर लोनली नाउ लॉन्च फॉर द ड्रम्स टू स्पीक द वायलेंस लिसन. अब क्योंकि मैं लोनली नहीं हूँ, यहाँ पे जाके वो कह रहा है कि मैं लोनली नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ड्रम्स बजें, वायलेंस सुने. बिफोर दे बिगिन द स्लो गिटार्स कन्वर्स, जिससे पहले कि वो चलें, इससे पहले स्लो गिटार्स को कन्वर्स करना चाहिए, स्लो गिटार बजना चाहिए. लॉन्च टू फ्लो फॉर फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स को भी चाहता हूँ, वहाँ के अपने देश के फ्लावर्स को भी चाहता हूँ. नॉट फॉर दियर स्पाइडर फीट ऑफ फ्रूट्स दैट नाउ ट्रांसफिक्स मी, बट फॉर दियर टच ऑफ सरफेसेस ऑफ शेप्स ऑफ कलर्स एंड ऑफ कोर्स द वेरियस सेंट्स दैट रियली गिव देम. अब मैं फ्लावर्स को चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि उनकी जो स्पाइडर फीट ऑफ फ्रूट्स हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो मुझे ट्रांसफिक्स किया हुआ इन्होंने अभी पे, ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रेप पे भी कोई ना कोई फ्लावर लगा होगा, एंड जो उसकी जड़ें हैं वो अब उसको जकड़ के रखी हुई हैं, ठीक है. तो वो कहता है इसके लिए पसंद नहीं करता मैं फ्लावर, क्योंकि उसकी जड़ें मेरे को जकड़ के रखें, लेकिन इसके लिए जो उनके उसको जब आप टच करते हैं, तो उसके सरफेस को जब टच करते हैं, जो फीलिंग आती है आपको, उसकी शेप्स देख के, उसके कलर्स देख के जो फीलिंग आती है, एंड ऑफ कोर्स जो सेंट्स, जो खुशबू आती है उनमें से, जो उनको एक एक्चुअल मीनिंग देती है, ठीक है, उस चीज़ के लिए मैं फ्लावर्स को याद कर रहा हूँ. एंड आई शुड लाइक टू सी माई चिल्ड्रन स्लेंडर शूट्स द ग्रोइंग ग्रीन रिमाइंडर्स ऑफ द सीड्स आई गेव. और मैं अपने बच्चों को देखना चाहूँगा. स्लेंडर मीन्स थिन, शूट मीन्स द एमर्जिंग स्टेम एंड एम्ब्रॉयनिक लीव्स ऑफ ए न्यू प्लांट. तो जो बच्चों को मैंने पैदा किया है उनके बच्चों के जो बच्चे होंगे उनको देखना चाहूँगा मैं, ठीक है. जो सीड्स मैंने दिए थे उसकी आगे क्या फल निकला है, क्या वो आगे बने हैं, जागे उसकी किस फॉर्म में वो आगे बने हैं, उन चीज़ को मैं देखना चाहूँगा. विल देयर ब्लॉसम फाइंड्स माई ग्रेव, क्या वो बच्चे जो मेरे बच्चों के बच्चे हैं या मेरे जो पड़ पोते हैं, क्या वो मेरी ग्रेव को देखने आएंगे. सो विल दे लुक एट माई ग्रेव्स, विल दे टू शेयर द रॉक्स, द चारकोल बेड, लोस्ट ग्लोड, द फायर ट्रेल. Charcoal bed means a very dark gray color. Fire trail means the track or indication marking the route followed by something that has passed, such as tree, such as the footprints of an animal or land, or the contrail of an airplane in the sky. ठीक है. तो वो कह रहा है कि उनके बच्चे क्या वो भी उन्हीं पहाड़ियों को देखेंगे जिन्हें कभी हमने देखा था, उन चारकोल बेड्स को देखेंगे जिन्हें कभी हम बैठे थे, उस लोस्ट गोल्ड को देखेंगे, क्या वो उन रास्तों से गुजरेंगे जिन रास्तों से कभी हम गुजरे थे. द फायर ट्रेल ऑफ फियर, द साइलेंट पाथ्स ऑफ फॉरेस्ट वी शैल नॉट नो अगेन, क्या वो उन जंगल के रास्तों से निकलेंगे जिनमें से शायद हम कभी दोबारा ना चल पाएँ.
Now, do I hear them mock my sons, my own sons mocking me? लास्ट में वो कहता है कि क्या वो मेरे बच्चों का मजाक उड़ाएंगे जैसे कि मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप की एक लाइन मुझे याद आ रही है। अलेक्जेंडर पोप वंस सेड, वी थिंक आवर फादर्स फूल, सो वाइज वी ग्रो, आवर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा था कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो फादर्स हैं वो फूल हैं, वो फूल हैं, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब आप बड़े होंगे ना तो आपके बच्चे भी आपके बारे में यही सोचेंगे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप ने बड़ी सही बात कही है। और यहाँ पे ये भी बात जो हमारा राइटर है वो भी यही एडवर्ड ब्राथवेट, ही इज़ ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग्स कि क्या वो उनके बच्चे जो है मेरे बच्चों का मजाक उड़ाएंगे जैसे कि मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी पोइम है ये, बहुत ही अमेजिंग पोइम है ये, ठीक है। सो डिडंट ही रैम्बल दस हाईलाइट्स द नेगेटिव consequences of migration. So this poem highlights the negative consequences of migration prompted by a single-mindedness that focuses on economic gains. So when you move to another country, the economic gains are in your mind. So he's trying to criticize that. So he's trying to criticize that kind of migration which is prompted by a single-mindedness that focuses on economic gains without a consideration of other aspects of the land of sojourn, such as the weather, the laws, values, ideologies, and cultures. Now, these ideologies and cultures often eventually become intrusive and disruptive to the well-being of society when the migrants return to their homeland. The tone of the poem is confessional, nostalgic, and remorseful. It is a poem that exposes the dark side of life in the West for Caribbean immigrants living there, who often are isolated, homeless, and die wretchedly. So friends, here our poem Didn't He Ramble, written by Edward Brathwaite, finally ends. I hope you understand the poem, and if you understand the poem, then please like, share and comment on the video. Please subscribe the channel for further such updates. We'll come soon with another video, another topic. Till then, take care, bye bye, and have a great day.